हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है नलिनी मैम, जो कि कंटेंट राइटिंग डोमेन में बहुत समय से काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। पूरा प्रॉपर एक कंटेंट राइटिंग का पाथ आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन अधूरी और नुकसानदायक दोनों है। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम मैम, आप अपने टाइम निकाल के हमारे लिए आई। तो मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें। Okay. So first of all, thanks for inviting me to this interview. I am Nalini, and I recently graduated from University of Delhi. I'm someone who loves rewatching comfort shows like The Big Bang Theory or Friends. I like to write, not the cheesy poetry or the fiction kind of writing, but copywriting, the more fun kind, if I may say so. And it is during my graduation that I got a chance to explore my interest area, and I stepped into the waters of freelancing. So I've been in the field in the field of content and copywriting for a little over 2 years now, and I'm currently helping people build their personal brands on LinkedIn. Yeah, that is about it. ओके, सो यू जस्ट मेंशन दैट you are graduated from University of Delhi. So Right. can you please elaborate your college life? Okay, so my college life was not exciting or thrilling in any way. I mean, I had a very normal college life, even though I had these like huge dreams of hanging out every day and chilling with my friends. But if anything, it was quite the opposite. But I would not complain because these experiences have only given me unforgettable lessons, I would say. But fortunately, my focus quickly turned towards making the best of the opportunities that I was provided with. So I was in Delhi, I was in a very good college. So I thought, like, why not make the most of the opportunities that I was given? So I joined a lot of college societies. I joined the content departments, and first I joined as a member, and then I switched to the role of the content head, and that was giving me the kick. So I thought like okay, इससे पहले मुझे as such कभी लगा नहीं कि मैं कुछ और कर सकती हूँ या क्या. मुझे I always knew that I would find my way somewhere in the social media or the writing domain because that is what interested me from the beginning. So it was nice to see that these college societies had a content department एक अलग से एक चीज. So I explored that and it turned out really well for me. So I explored and then I came to a conclusion that this is what I want to do. So my college life was very boring. I did not have a great set of friends or like I was hanging out every day or anything. But in a way, I think it turned out well for me in terms of like finding my interest area. ओके, सो बेसिकली जब आपने कंटेंट राइटिंग में एंट्री की तो वो एक हॉबी थी, और अब वो पैशन बन गया है या अभी भी एक्सप्लोरिंग फेज में ही है? Okay. So more like my love for writing, which was kind of a hobby that turned into a passion. So like I said earlier, I liked writing, in the sense that I would always be jotting down something or the other in my notes app. Like if I came across an ad or if I came across a really good copy or a description, I would try to rewrite that in my own words, or like I'll see if I can make it any better. So I was like doing all of that. So I figured that I could do that more professionally and monetize this skill. So I came to know that people are selling their words and they are earning like huge. So I thought like why not give that a try. So even though it required a lot of effort, I was willing to do that. So somehow that became my passion. So I don't know if that makes sense, but all of this led to me like finding my passion in content writing. राइट, राइट. So basically, you mentioned that you stepped into the freelancing world. So how did you manage your personal life, professional life in the college and after the college? Okay, so professional and personal life. I don't think there is much going on in my personal life right now. So actually, what I'm trying to do is I only accept projects or I find projects जितना मैं ले सकती हूँ और जितना मैं जिस पे काम कर सकती हूँ.
It's not like I'll take like 10 projects at a time and then I'll start working or like and then थोड़ा बहुत मेरे से बैलेंस नहीं हो पाएगा तो मैं उतना ही लेती हूँ या उतना ही करती हूँ जितना मुझसे हो पाएगा. So I only focus on work. I'm only focusing on work these days. But if at all I feel like the work is taking a toll over me, I just choose not to focus on work at all because I am in the creative space and it requires a lot of, I mean, it requires a lot of effort and it requires you to be very calm in a sense that you cannot just force yourself to like churn out words whenever you want. So I need to stay in that mental space to be able to write better. So professionally and personally ka I would say that jitna ho sakta hai utna lo, take breaks and like don't overdo yourself. Jitna ho raha hai utna karo. So that is what I would say. So there is no balance per se, but this is how I'm trying to figure things out and Okay. currently. मतलब लोड नहीं लेनी है, जितना नॉर्मल चल रहा है चलने दो। हाँ, क्योंकि फ्रीलांसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है. इट्स नॉट लाइक यू हैव टू वर्क इतना घंटा ही. मतलब अगर मेरा मोस्टली ऐसा होता है कि थ्रू आउट द डे आई वोंट बी डूइंग एनीथिंग but it's suddenly at night, this does not happen every day of course, but suddenly at night I feel like this rush of productivity somewhere it comes, it hits me and then I start working and then one go ke andar I do. And sometimes it happens ki throughout the day I plan my day accordingly and like do thoda thoda काम as and when I am able to do it. राइट। ये बात तो मैं अभी महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि फ्रीलांसिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे पूरे दिन कोई काम नहीं रहता है या मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा, और रात को एकदम से क्लाइंट का डिमांड आ गया कि हमें चाहिए कल या परसों या तुरंत एकदम से। तो हाँ, ये मैं आपको बात फील तो कर सकता हूँ इस टाइप से। तो ऐसे भी नहीं होता है. लाइक देयर इज वी सेट बाउंड्रीज. लाइक वी कैन नॉट जस्ट एक्सेप्ट clients giving us work overnight. But yes, if they want, if the deadlines are close, कुछ कुछ होता है जैसे अगर दिन में ही पोस्ट जाना है तो वो जाना ही है. जाना तो ही है। अब वो मेरी हेडेक है कि वो मैं रात को कर रही हूँ या उससे 2 मिनट पहले सल्टा रही हूँ. इट्स नॉट लाइक यस, क्वालिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज. बट यस, जब भी जैसे भी आपको ठीक लगे, दैट इज द प्लस पॉइंट. ओके। सो इफ यू टॉक अबाउट योर इंस्पिरेशन इन कंटेंट राइटिंग, इन राइटिंग क्वालिटी कंटेंट बेसिकली, तो ओके. वो क्या होगा? Okay, so I think you need to consume good content in order to write good content. So I'm very mindful of who I'm following. So I am very active on LinkedIn. So I don't follow or I don't accept random connection requests. You see, I follow people who are from my field, who are already doing what I want to do or where I want to reach, and people whom I can like get inspiration from. So people who are doing great, तो उनका कंटेंट मुझे इंस्पायर करता है तो मैं उनको अपने सर्कल में रखती हूँ, अदरवाइज नॉट. तो दैट इज द केस एंड इट गोज विद एवरीथिंग एल्स. लाइक आई साइन अप फॉर न्यूज लेटर्स जिससे मुझे लग रहा है कि हाँ मैं आज ये पढ़ूंगी तो मतलब मुझे उससे इंस्पिरेशन मिल सकती है या दिस पर्सन इज डूइंग ग्रेट. तो इससे मैं मतलब आई कैन डू समथिंग. आई मीन आई यू रीड गुड बुक्स एंड देन यू कम अप विद ग्रेट थॉट्स. वही सेम है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको किस क्या चीज में आप अपना मतलब if you are reading good, then you get good thoughts, you end up writing better. But if you're following random people, you're following everybody in your field, so 100 people, 100 thoughts, 100 opinions, so that really gets scattered. So I would say ki follow only those people whom you think, who are in your niche and who you think are doing great and who can help you. So I think that is where I get my inspiration from. Three or four people to mention. I started following Shreya Patar, Saheli Chatterjee. So all of these people are like are at a very they have like scaled their businesses and everything. So these people, I think most of the freelancers have looked up to them and they are where they are right now. I also started with them only, but these days if you go on LinkedIn, there are so many creators that are doing so great. तो मतलब मैं उनकी पोस्ट रीड करती हूँ और लाइक उनका कंटेंट फॉलो करती हूँ, उनके न्यूज़लेटर्स पढ़ती हूँ, तो मुझे काफी अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं. सो दैट इज लाइक माय मेजर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. ओके। सो बेसिकली आपको कंटेंट जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो अच्छा क्वालिटी कंटेंट हो। लाइक ये नहीं कि हाँ आपकी दिन की शुरुआत इंस्टाग्राम रील से हो रही है और दिन हाँ भर रील हाँ. ही चल रहा है। राइट राइट, आई कैन इट इज ऑल्सो अंडरस्टैंड। लाइक बहुत बार ये भी होता है कि आप रील भी देख लिए या मतलब रैंडम चीजें भी देख लिए तो आपको उससे भी आ जाते हाँ। हैं.
बट ऐसा नहीं है कि यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन फालतू चीजें, तो उधर से तो कुछ नहीं मिलने वाला। राइट, राइट। सो अगर आपकी इस पूरी जर्नी के बारे में बात करें तो आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे पर्टिकुलर स्टेजेस पे, कि हाँ अब कुछ दिक्कत आ रही है, अब कुछ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहें तो। Okay, so I think if you have the skill, the only challenge that anybody faces here in this field is like getting clients. So finding them and convincing them, like, at least to me, is a huge task. And not only that, if you even end up finding someone, they need to pay you fairly for what you're doing. तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप क्लाइंट्स पे क्लाइंट्स तो ले रहे हो बट दे आर पेइंग यू पीनट्स, दैट डज नॉट वर्क। तो यू अगर आपकी स्किल्स आप काफी स्किल्ड हो तो मतलब दे शुड आल्सो पे यू अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। सो आई हैव बीन अंडरपेड एट मेनी स्टेजेस। I have worked for free also in the early stages of my freelancing career, but I've slowly learned to value my work and started charging for what it's worth. So for me the major challenge was टू फाइंड क्लाइंट्स जो कि जितना मेरे हिसाब से मुझे पे करना चाहिए उतना मुझे मिलना, वैसे क्लाइंट्स मुझे मिलने में काफी दिक्कत हुई थी। बट यस, वंस यू स्टार्ट वैल्यूइंग योर स्किल्स, once you know कि yes, this is what I'm bringing to the table, then of course problems are solved and you start getting better clients and you scale. That was ओके। a major challenge. बेसिकली जो आपके क्लाइंट्स हों वो आपके काम की वैल्यू के हिसाब से पेमेंट करें, तो ये आपका मेजर चैलेंज था। राइट। Right. अगर पोर्टफोलियो की बात करें कि जैसे आप किसी नए क्लाइंट को पिच वगैरह कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मतलब क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं? ओके, तो पोर्टफोलियो पहले तो लाइक लेट्स से आप रीच आउट कर रहे हो किसी को, तो उसमें सबसे पहले यू नीड टू क्राफ्ट अ वेरी गुड पिच। ठीक है, तो मतलब आपको ये एकदम सेल्सी साउंड नहीं करना है या पुशी साउंड नहीं करना है कि हाँ देखो मैं आपको ये कर सकता हूँ, ये दिस इज व्हाट आई विल प्रोवाइड। नो, यू नीड टू लाइक लेट्स से यू आर पिचिंग ऑन लिंक्डइन ओनली, यू फर्स्ट नीड टू बिल्ड ट्रस्ट। तो फर्स्टली आपका प्रोफाइल शुड स्क्रीम योर स्किल्स, लाइक योर वर्क शुड यू नो उतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि उस कोई भी आता जाता देखेगा आपका जो प्रोफाइल है, ही और शी शुड फील दैट yes, they are doing a great job, and so accordingly you first build a connection, you first build your network, and then you pitch your clients, तो sorry, pitch prospects। तो उनको जब आप pitch करते हो तो you don't just start with a yes, I'm going to provide you this, you need to craft a well written pitch जिसमें आप उनको पहले don't make it about yourself, make it about them. Tell them how they are going to be benefited. So tell them what is the one thing that they're missing. If they have a website and their landing page is not good, you can just say like I scroll through your website, I saw your landing page or whatever, and then I felt like this area could be done better. So like I feel if you change this, then it will be better for you. You will get more conversions. Then if they are interested, you send them your portfolio or selective samples. ऐसे नहीं कि आप जितने भी पीसेस आपने लिखे हैं वो सब कंपाइल करके उनको भेज दो। नो, डोंट डू दैट। दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका सब कुछ बैठ के देखे। वो एकदम स्पेसिफिक, लाइक उनकी क्या नीड्स है उसको ध्यान में रखते हुए select only those samples which are relevant, and then just tell them like I've picked out samples for you, do check my work, and then let's get on a call and discuss how we can move further. So that is the thing, don't send everything to them. जैसे अगर किसी का ब्लॉग्स का है तो देन सेंड ओनली योर बेस्ट ब्लॉग्स। अगर किसी का सोशल मीडिया कैप्शंस का है तो देन सेंड ओनली बेस्ट कैप्शंस वाला। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? सो या। राइट। सो बेसिकली मतलब जो जिस क्लाइंट को आप पिच कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना जो पोर्टफोलियो है या जो अपना वर्क है, सैंपल है, वो सेंड करें। लाइक अगर किसी राइट। फूड फूड वेबसाइट को आप टेक्निकल या वैसा कंटेंट आप शो करोगे तो शायद वो उतना ना समझें। राइट। हाँ। बेसिकली डोमेन वाइज सेल करें। ओके। सो मैम, आई हैव सीन योर पोस्ट ऑन लिंक्डइन, लाइक टेल अस मोर अबाउट द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन राइटिंग लिंक्डइन पोस्ट एंड पोस्टिंग दैट इन consistent way. Okay. Okay, so there are a lot of factors that you need to consider before posting. So
firstly, whatever you have written, the post should be relevant to your audience, should be informative, and should be relatable. So you need to write with a goal. आप इसीलिए मैं कहती हूँ कि मतलब आप आपको अगर impressions या फिर likes वगैरह भी चाहिए, तो आपका पहले नेटवर्क ही वैसा होना चाहिए कि जिससे वो रिलेट कर पाए. तो यू आर बिल्डिंग कनेक्शंस, बट वो कनेक्शंस अगर आपके डोमेन से है ही नहीं तो वो रिलेट कैसे करेगा, या उसको कैसे पता चलेगा कि इन्फॉर्मेटिव है भी या नहीं, उसके काम आएगा कि नहीं. तो दैट इज वाई डोंट एक्सेप्ट रैंडम कनेक्शंस. आई नो दिस इज नॉट पोस्ट रिलेटेड, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आफ्टर यू पोस्ट यू नीड टू, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि व्हाई एम आई नॉट गेटिंग एंगेजमेंट और व्हाई आर पीपल नॉट लाइकिंग माय पोस्ट और व्हाटएवर, तो उसके लिए मेक श्योर दैट योर पोस्ट आर रिलेवेंट, informative and relatable. तो आपका गोल क्या है लिखने से पहले? डू यू वांट टू कन्वर्ट लीड, डू यू वांट टू अट्रैक्ट लीड्स, डू यू वांट लाइक्स, व्हाट डू यू वांट? तो उसके हिसाब से आप पोस्ट करोगे. इट्स नॉट लाइक यू पोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी, you start with whatever comes to your mind, but then eventually you find your goal कि हाँ मुझे ऐसे ये चीज चाहिए, तो मैं उसी से टारगेटेड पोस्ट बनाऊँ. तो पहला चीज दैट. Second is like you need to also experiment with your post timings, because it's not like कि बहुत लोग होते हैं जिनका दिन में पोस्ट करते हैं तो that works for them. कुछ लोग होते हैं जो शाम को करते हैं तो उनका पोस्ट वर्क कर जाता है. तो it's up to you. Like you need to experiment with your post timings. So even if your posts are relatable and informative and etc., sometimes they don't end up working because of the post timing. So you need to experiment on that part. So coming back to how the post should be written, it should be very clear and it should convey a message. The formatting should be on point. And like ऐसा मतलब आपका पोस्ट है कितना भी इंफॉर्मेटिव हो, अगर उसका हुक अच्छा नहीं है तो people will not click on your post only. So your hook is something that invites your reader to read your posts. Okay, so that should be very crisp. And there are various techniques that people use, like they use a number in their hook, or they use transformation. जैसे how to post बहुत चलते हैं, listicles चलते हैं. तो मतलब आप जो भी लिख रहे हो वो genuine तो होना ही होना चाहिए. Secondly, it should be inviting. तो आपका hook बहुत ही crisp होना चाहिए. Other than that, to make your posts unique, the one thing that you cannot Google or get on ChatGPT is that are your stories. So आपका जो स्टोरी टेलिंग एलिमेंट होना चाहिए आपके पोस्ट में, एक पर्सनल टच होना चाहिए, तभी लोग उससे रेजोनेट कर पाएंगे. एंड ओनली देन आर योर पोस्ट not Googleable. Otherwise, people will Google. Like, let's say I want to write a good post on Google. तो आप गूगल कर दोगे हाउ टू राइट अ गुड पोस्ट, देन यू विल गेट पॉइंटर्स कि हाँ ये है. तो दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. So you need to write what did you do, what worked for you, and all of that. So personal touch is a must. So that is only going to help you be in the game in the longer run. So once you have posted, the story does not end there. You need to engage. You need to, start engaging with your own posts, okay, comments, and then on the other and on the posts that are coming on your feed. So that is there. But like, अगर आप ये out of compulsion करोगे, again it will not work. क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि it's a give and take. Like if the person is commenting on your profile, only then are you going and commenting on theirs. So it's a barter. No, the barter here does not work. You need to be very authentic, not authentic, okay, you need to be genuine. So don't make it a barter situation, don't make it a give and take. Do everything, I mean, be there, uh, and do everything that you're doing genuinely. So coming to the consistency part, I know it's like very difficult when you're starting out. आपके पास में बहुत सारे, कभी कभार होता है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, एंड देन यू रेगुलरली पोस्ट. आफ्टर अ पॉइंट यू फील लाइक you burn out, मतलब you start getting burnt out. So उस टाइम पे आपको लगेगा कि लाइक अब मैं क्या करूं कि मैंने जितने भी पोस्ट आइडियाज थे, आई हैव रन आउट ऑफ देम, व्हाट डू आई डू नाउ? तो इंस्टेड ऑफ दैट, कंसिस्टेंसी का सबसे पहले तो मतलब ये नहीं है कि आप 7 के 7 days आप पोस्ट करो. डिसाइड योर पोस्ट डेज. सो आई डोंट पोस्ट एवरी डे. तो मैं पोस्ट करती हूँ 3 से 4 days, 4 days in a week. So if I have chosen Monday to Thursday, I will show up from Monday to Thursday. तो दैट इज लाइक बी रेगुलर. अगर आप 2 दिन भी चूज कर रहे हो तो उसी 2 दिन पे सेम टाइम पे शो अप.
So that is consistency. So that way, you will not run out of ideas. Firstly, I mean, if you are planning ahead and if you are posting regularly, तो मतलब आपका चलता रहेगा. So you will not have to worry about consistency at all. Fix 4 5 days for a week for posting, and on the days you don't post, see LinkedIn is demanding. You cannot like be absent. अगर मैं 4 5 days post कर रही हूँ और बाकी के 3 या 4 दिन मैं नहीं LinkedIn पे show up कर रही हूँ तो मेरी reach चली जाएगी नीचे. So what I have to do is I'll have to engage with the posts on my feed. So on days you're not posting, engage. So this is how consistency work. It's not like you need to post 7 days a week. Even if you're posting 2 to 4 days a week, show up on those 4 days on the same time and engage. Do everything genuinely. If you don't do genuinely, I don't think it will work. That सो बेसिकली लिंक्डइन पोस्टिंग में सबसे पहली चीज ध्यान देनी है वो है हुक। मतलब अगर ऑडियंस आपके कंटेंट तक पहुंचेगी नहीं, खोलेगी नहीं उसे, तो कितना भी अच्छा कंटेंट हो कोई फायदा नहीं है उसका। राइट। दूसरा, जेन्युइन रहना है। और कमेंट्स वगैरह ये नहीं कि तुम मेरे में कमेंट कर दो मैं तुम्हारे में कर दूंगा, लाइक ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। राइट। एंड कंसिस्टेंट, मतलब एक आप अपने अकॉर्डिंग एक कर लीजिए कि मुझे मंडे वेंसडे फ्राइडे पोस्ट करनी है, तो उस दिन फिर पोस्ट करना है, एक पर्टिकुलर टाइम सेट करके करना है तो फिर करना है। राइट। And ma'am, you also mentioned in your, I guess, LinkedIn bio that I'm a ghost writer. What does this word mean? okay. So a ghostwriter is someone who writes for someone else or a brand, but they don't take credits for it. So let's say you are a founder of your startup and you are busy, so you don't have time to manage your LinkedIn. So you hire me instead. Now I get to know you, I understand you, what you do and everything. I ask you a lot of questions and I get the best out of you as to related to your work and everything. So I start posting or I give you the post and you post on your profile. That works either way. तो मैं तुम्हारी जगह पे लिखूंगी एंड देन यू पोस्ट. सो आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट्स फॉर इट. वो जाएगा आप ही के नाम पे. So I write in your voice, you post it and you take credits for it, but you pay me for writing Right. uh, your work. So people hire ghostwriters for writing what articles, blogs, social media posts, and even books. So that is ghostwriting. Right, right, right. So मैम, अगर एआई की बात करें जो इस समय बहुत ट्रेंडिंग में है, तो आपको क्या लगता है कि आपके डोमेन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? मतलब पर्सनल टच के अलावा एआई कैसे और मतलब हार्म कर So सकता I है? think the major thing is कि पहले जब AI the whole wave of this AI thing started, मतलब सबको ऐसा लगा था कि मतलब this is going to take over, but I don't think that is the case because like even if you chat GPT पे आप कोई भी question डालोगे, it gives very robotic answers. And हमारा जो human brain है, it is conditioned like we need something new every time, every day, और every हमें हमें एक चीज फॉलो नहीं करनी है. वी नीड वेरिएंट्स, वी नीड टू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, वी नीड हमारा जो दिमाग है, वी फाइंड लाइक हमें उस तरीके की चीजें पसंद आती है जो कि विच इज नॉट रोबोटिक, विच हैज ह्यूमन टच टू इट, जिसपे जिसमें यू कैन नॉट लाइक let's say you are going to buy like a biscuit or something, but उसके अगर उसके ऊपर आप ऐसे लिख दोगे कि है ना like buy this because it has this, you will not buy it because it's not tempting. So whereas human beings know how to convince a human, the other person, so you need to touch those pain points, you need to add थोड़ा बहुत wit भी होना चाहिए. वो सारी चीजें combined chat gpt and AI cannot do. So if you write, if you are not very skilled, AI can very easily take over, can replace your job. But if you think, or if you are a skilled writer, I don't think AI can replace you. ओके। It will not. I think we know it cannot. एआई कैन नॉट रिप्लेस, मतलब आपके पास अगर स्किल है तो आप एक सबसे बड़ा तो पर्सनल टच ही हो गया। फिर जो स्टोरी टेलिंग और फैक्ट्स वगैरह वो सब चीज़ें आपने मेंशन करा, वो बेसिकली अभी एआई टूल्स इतने अपडेटेड हैं भी नहीं। प्लस ये चीज़ें अभी इमोशनली एक जो कनेक्शन होता है ऑडियंस में और राइटर में, वो बिल्डअप करना थोड़ा सा भी टफ है।
एंड इफ मैम यू अगर नीड रोबोटिक डिस्क्रिप्शन, वो आप जनरेट कर दो, वो हाँ, आपको मिल जाएगा, वो हर कोई कर सकता है। बट राइट राइट, लाइक जो जहाँ पे आपको ऐड करना होता है अपना पर्सनल एलिमेंट, और जो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन होता है, आई दैट इट कैन नॉट। या सो मैम जैसे कि आपने अभी तक फ्रीलांस वर्क ही करा है गेस, तो आप इसको एज अ फुल टाइम में जाने का कुछ सोच रही हैं या अभी फ्रीलांस ही सही है या आगे कुछ ऐसा? Huh. So actually, I started it as a very safe choice. I mean, it was a very safe choice कि जब मैं college में थी तभी I started with this. So मैं I was just giving it a shot कि मतलब अगर if it works out then it's good. Otherwise, I'll go ahead and continue with my studies, or take a job maybe. But with time, I think I've gotten a lot of projects and I've been working. तो मतलब अभी right now I'm doing it full time only. I'm focused on full time freelancing only. But yes, अभी तो यही plan है. If I continue getting more clients, if I continue getting more high paying clients, I will be doing this full time. So ओके, सो आप हायरिंग वगैरह भी शुरू करेंगी, स्मॉल कॉपी राइटर्स हाँ, वो साइड? hopefully if I like end up getting a lot of projects and I need writers for my team, definitely. ओके, सो मैम अगर आपके डेली रूटीन के बारे में बात करें, मतलब कंटेंट और क्या बोलते हैं, क्लाइंट्स को मैनेज करना, बाकी चीजें और वो सब चीजें, तो एक रफ आइडिया। Okay, so my routine is quite messed up. I do not have a routine. So right now, though, like I said, I'm only focused on freelancing. So I wake up, do some of my clients' work. I have my breakfast. I reply to my comments and engage on my own profile for a bit. Then I start planning and writing for my clients and like do unka kaam, then manage their profiles, and then have lunch and then get back to my own personal branding, and then finally I like end my day with dinner at what 7:38, and then I'm done. I do not like take the load of working overnight or pulling all nighters, because अगर मेरे को ऐसे कोई idea आता है, if I have to work on something, then of course the time varies, but other than that I like to keep my schedule थोड़ा loose, so that like my creative juices are flowing. ओके, सो आप सिर्फ इंडियन क्लाइंट के साथ वर्क करते हैं या फॉरेन क्लाइंट्स वगैरह के साथ भी? So right now I'm working with Indian clients only, because I'm actually planning to get into the international space. But अभी I am quite booked, so I thought like मेरा अभी contract एक बार सबके साथ खत्म हो जाए, then I will get into the international market Okay. definitely. मतलब अभी तो बस, मतलब एक तरीके से शुरुआत करी है, अभी बहुत लंबा रास्ता आपको तय करना है, राइट? बहुत लंबा रास्ता है। अभी स्टैटिक नहीं रहना है, मतलब और ग्रो ही करना है, और ये सबको भी करना चाहिए, राइट? सो इसके साथ ही मतलब क्वेश्चन तो सारे खत्म हो गए हैं। आप कुछ एडवाइस कुछ शेयर करना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को, जो इसमें इस डोमेन में आना चाह रहे हैं या थोड़ा वर्क कर रहे हैं, उनको और अच्छे से गाइड, तो एक शॉर्ट छोटा सा। Okay, so if you are planning to get into the world of content and copywriting, I would suggest first research and talk to people who are already in the field. Follow people whose content you actually resonate with. Follow these big names, like I mentioned, Shreya Bhattar and Saheli Chatterjee. They have this, they on their Instagram, they've posted, like they keep posting everything about freelancing and content and copywriting. So I feel when you get to know what this field is about, what work is involved, बहुत सारी चीजें हैं content और copy में. It's not like just writing articles or blogs. It's much more than that. So I think you need to figure out what you want to do, what are your strengths, and work on it. Upskill yourself first. If you don't have the skills, nobody would want to work with you. So I would suggest like you really need to upskill. You need to develop those skills to so that people hire you. So once you have this required set of skills, you need to start by building your portfolio or like create niche specific samples. You know your niche, you know what you're going to do, so now you have to write samples which people, I mean jo जिसमें भी you want to get in, जिस भी field में, or for whichever person you want to work with or the brand, you need to write content around that. You need to work on that area first,
and then pitch beta clients. You find beta clients, meaning you work with people in exchange for testimonials or recommendations. You can work for free, or like I mean, I wouldn't say like you should work for free. If you have like, if you are skilled, don't work for free, of course. But yes, so like everybody starts small, so don't be afraid. You will be paid later. But when you're starting out, I would suggest like even for less money, you just start, ताकि आपके पास testimonials और recommendations आ जाएं. क्योंकि जब वो आपके पास में होता है, तो you when you pitch bigger clients, bigger projects, you will have testimonials to back you up there. So that's that. Then I think you will find your way eventually. But if you're stuck midway or need personalized guidance, you can reach out to me on LinkedIn, and get on a consultation call with me. I would like totally help you out. Like you can drop your queries and everything. I would like love to help you out. That's all. ओके I hope that was helpful. ओके। सो बेसिकली कंटेंट राइटिंग जो डोमेन है काफ़ी ज़्यादा वाइड है। आपको कौन से डोमेन में जाना है, लाइक घोस्ट राइटिंग हो गया, कॉपी राइटिंग हो गया, या जो भी आपका इंटरेस्ट पार्ट है, आप पहले वो फिगर आउट कर लें, फिर धीमे धीमे करके आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, एंड फिर आपका क्लाइंट बेस बनता ही जाएगा। राइट। सो मैम, यहाँ पे क्वेश्चन तो सारे खत्म हो गए हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक छोटी सी अपील, लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए हमारी ऑडियंस को कर दें। Okay, yeah, definitely. He's very sweet. I mean, I've checked out his content. He's like doing great. So please like, share, and comment and subscribe to his channel. ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो बेसिकली यहाँ पे इंटरव्यू खत्म हो गया है। मैम का लिंक्डइन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उनको रीच आउट कर सकें जब भी आपको डाउट हो। तो तब तक के लिए चलते हैं यार। कुछ भी डाउट होगा तो मैम से पूछना, कमेंट में डाल देना, आगे फॉरवर्ड मैं भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच माई ऑडियंस। तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।